हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ लिसनिंग MCQs। गाइस बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% आपके जो MCQs हैं वो करेक्ट होंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने खुद बहुत सारी लिसनिंग्स की हैं ये वीडियो को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एंड बिलीव मी ये ट्रिक हर उसमें काम आई है। लेट्स सी, पहले हम बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं कि हमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है, सो जो हमें वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें आती है वो है कि ना हम मतलब टाइम नहीं मिल पाता हमें बड़े बड़े लेंथी MCQs और उनके ऑप्शंस पढ़ने का। ठीक है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है गाइस, जब आपको वो पहले एग्जाम्पल बोल रहा होता है ना सेक्शन 1 की, तो तब आप पढ़ लो जाके। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर लो ताकि जब तक आप उस सेक्शन पे आओ तो आपको सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ने पड़े। ठीक है, सो लाइक जब सेक्शन 1 की एग्जाम्पल है, आप सेक्शन 4 के MCQ पढ़ लो। नेक्स्ट इज, आपको वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं, दैट मीन्स यू रियली हैव टू वर्क ऑन योर वोकैब। आपको सिनोनिम्स आने चाहिए। अब प्लीज़ वोकैब पे वर्क कीजिए। मैंने भी वोकैब की सीरीज़ बनानी शुरू की है, वो देखना चाहते हो वो देख लो, किसी और को रेफ़र करना चाहते हो और को रेफ़र कर लो, बट प्लीज़ वर्क ऑन योर वोकैब। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़, हमें लगता है कि आंसर तो ए है बट एक्चुअल आंसर होता है सी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते नहीं हैं प्रॉपरली। हम उनमें जो हाउ एवर, बट, दो जैसे वर्ड्स आते हैं जो कि सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, हम उन वर्ड्स को नहीं सुनते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दोज वर्ड्स। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम ऑफ मैजिक ट्रिक। ये बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू एज मच एज पॉसिबल पीपल एज यू कैन। सो नेक्स्ट नाउ द ट्रिक गाइज, 80 to 90% आंसर्स आपके एंड में बोलता है वो। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशंस में समझेंगे। ठीक है, बट इसमें एक एग्जाम्पल, एक एक्सेप्शन भी है। वो ये है कि जब वो आपको कोई रीज़न देता है ना, तब वो उसका जो मेन वर्ड, जब उसने आंसर पहले देना है ना, तो उस क्वेश्चन का मेन वर्ड वो पहले बोल देता है। ठीक है, सो अभी हम एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है गाइज, इसमें दोनों की एग्जाम्पल हैं, एक्सेप्शन की भी और नॉर्मल ट्रिक की भी, तो प्लीज़ पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इट्स ओनली 12 to 13 minute वीडियो। ओके, एंड लेट्स सी, पहले एक्सेप्शन की एग्जाम्पल देखते हैं। You will hear someone giving a welcome speech at the opening of a new arts centre. Listen carefully and answer questions 11 to 15. Good evening, everyone, and welcome to the new Midlands Arts Centre. We are delighted that so many of you have managed to brave the rain and come out tonight to help us celebrate the opening of this new facility. I'm here to tell you a little bit about the complex itself and show you what is on offer here. But first, a little background. It was well over 15 years ago now that the idea was born to create a centre of drama, music and art that would attract visitors from the local area and beyond. Our aim was to provide a place of entertainment for the whole family, which would also offer education and training opportunities to performers and artists from around the world as well as the local community. With the help of local businesses, we aim to offer annual grants to up-and-coming artists who might otherwise be unable to fulfill their dreams. Okay, so here she used the word aim as the main purpose. So यहाँ ये हमारा एक्सेप्शन हो गया कि उसने हमें रीज़न देना था, तो उसने पहले आंसर बोला है, तो उसने पहले बोला है मेन वर्ड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। As you will see when you look around, we already have an exhibition of 2 young local artists. You will find that in exhibition room B. I must admit I've never been a big fan of abstract art, but I was blown away by the exhibits on display by these talented youngsters. Exhibition room A houses our other temporary display. This one includes sculpture made from recycled objects and a collection of film posters from the 1970s and 80s, a must for any film buffs out there. The Rees Gallery houses our permanent exhibits, which include a collection of historical photographs of the local area and work by local artists,
Gemma Brock and Giles Priestman. Here our trick applies. उसने end में बोला है रीस गैलरी कि उसमें हमारे permanent exhibits होते हैं. पहले दो उसने पहले बोल के मतलब वो confuse कर रही थी. Okay, let's see next. There will be guided tours every 15 minutes throughout the evening. For any budding young artists here this evening, we have a drawing workshop starting in 5 minutes with celebrated local cartoonist Andy Minot. Andy will be sharing some techniques for creating caricatures and showing some of his most famous works. You will find Andy at the back of the Rees Gallery, and all under 16s are welcome. इसमें भी उसने एंड में बोला है ऑल अंडर 16 मतलब टीनेजर्स हो गए सारे. सो इसका आंसर हो गया 1. सो हमें सिनोनिम पे भी वर्क करना है बट आंसर हमारा इसमें एंड में ही आया है. There are many other events taking place this evening, but I haven't got time to go through all of them. Your programme will give you details. I've just picked out a few of the highlights. Later in the evening, there will be a performance from the Midlands Youth Band and Dale Park Youth Choir. This is the first time they have performed together, and I can guarantee that it is not to be missed. They are performing tonight in the Gilbert Theatre at 7 p.m, but don't worry if you missed that one. They will be on again at 8:45 p.m, this time in the studio. Be sure to get there in good time. हाँ पे भी उसने पहले दोनों थिएटर्स की बात कर लिया और एंड में बोला है कि वो स्टूडियो में भी परफॉर्म करेंगे. सो देयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों की बात पहले हो गई है तो थर्ड आंसर है मतलब बी आंसर है. सो ये भी आंसर उसने एंड में बोला है. Another important event tonight is a talk by local writer James Carver. He'll be discussing his series of historical crime novels and reading from his latest book, The Secret Stone. He will also be signing copies of his books. I know he has a lot of fans out there, so make sure you go along. The event starts in the studio at 7:30 p.m. Finally, the big event of the evening will be a performance by the award-winning Simon Bradford and his Jazz and Blues Band. Simon has recently completed a sell-out tour of Europe and has just released a new album. And we are delighted he has travelled all the way from his home in Canada for tonight's performance. His show and album have received fantastic reviews and I really can't wait for this. Be sure to be seated in the Moffat Hall in good time for the show. It starts at 9 p.m. and will be the final event of the evening. ओके सो हेयर ऑल्सो आंसर सी है क्योंकि उसने एंड में बोला है कि ये हमारे उसका लास्ट इवेंट होगा म्यूज़िक वाला. ओके गाइज सो ये हमारा प्रूफ करता है कि हमारी ये ट्रिक 100% एप्लीकेबल है. बट मैं आपको सेक्शन 4 के भी MCQs करके बताती हूँ. उसमें भी बताती हूँ कि ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल है. ओके लेट्स. You will hear part of a lecture about text messaging. Listen carefully and answer questions 31 to 37. Good morning, everyone. I've been invited here today to talk a little about the research I've been doing into quite a modern form of communication, text messaging. I'm sure most of you here today will have already sent and received at least one text message today. It has become the most popular form of communication between friends and family, despite strong competition from social networking and email. We now send around 8 trillion text messages every year, which is amazing when you think that the first text message was only sent in 1992. Over half of British people now use a smartphone, and of those, over 92% choose texting as their preferred method of communication. And well over half of British people text every day, compared to only 47% who make a daily phone call. That's about 50 texts a week. गाइज एंड में बोला उसने 47%. बाकी दोनों की बात उसने पहले कर दी थी तो ए आंसर. ओके लेट्स सी नेक्स्ट. For the average person, which might sound a lot, but is comparatively few compared to other parts of the world. Unsurprisingly, it is young people who send the most texts. Amongst 18 to 25-year-olds, the average is 133 messages a week, which is more than double any other age group.
And whilst 15% of the over 65s say they communicate by text on a daily basis, for the youngest age group, this figure rises to 9 out of 10. And it is this age group who prefer to message friends compared to the older generation whose main text recipients are family members. And guys, end में बोला है उसने 9 out of 10 means 90%. Okay, this much you have to calculate, common sense. Okay, so end में बोला है again. Apparently, men text more than women do and have a larger number of contacts that they regularly text, but they tend to be more functional in their texting and keep their texts short. Compare this to women who send fewer texts but are more likely to send long ones in which they cultivate friendships and relationships. More than And guys, he said men keep their text short. So ये भी उसने end में बोला है. Let's see the next exception. For many of you, a time without text messaging might seem a dim and distant memory. In fact, it was back in December 1992 that the first ever text message was sent via the Vodafone telephone network from a PC to a telephone. The message was a simple greeting, Merry Christmas. The original idea was to use texting as a quick and easy way to communicate within a company, a bit like paging. In fact, it wasn't until 1994 that the first commercial text messaging service was introduced by a mobile network, and even then, consumer interest was very low. It was not until 1993 that the first text messaging service was launched in Sweden. Okay, so here उसने ओरिजिनल वर्ड बोला है. मैंने हैंडल वो सर्कल भी किया था. आई होप आपने ध्यान दिया होगा. सो ओरिजिनल वर्ड बोलने के बाद उसने इमिडिएटली आंसर बोल दिया. ओके, सो दिस इज द एक्सेप्शन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. A year later, Vodafone introduced texting to the UK. At first, texters were only able to text someone within the same network, and it wasn't until 1999 that there was full compatibility between mobile networks. At first, texting was quite a long and laborious task, as predictive texting was not introduced until 1995. So for early texters he used first texters और उसके immediate बाद जो उसने बोला था वो था A option. तो आंसर A हो गया. So guys, exception में वो words ज़रूर बोलेगा. Another characteristic of early texting was that each message had to be short, at 160 characters or fewer. This limitation on length is what spawned the common shorthand used by texters the world over. Abbreviations like BTW for by the way and TTYL for talk to you later have now entered the English language for good, whether we like them or not. ओके गाइज, यहाँ तो उसने बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया है कि लिमिटेशन ऑन टेक्स्ट था. ठीक है, वैसे उसने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड्स यूज किया था इसको एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एक्सेप्शन केस. नाउ सी द लास्ट. Fears that this text speak would have an adverse effect on children's language skills have so far proven incorrect. In fact, a recent study has shown that children who are fluent in text messaging have higher than average literacy skills compared to those who don't text. ओके गाइज, अगेन एट द एंड उसने बोला है लिटरेसी स्किल्स. लिटरेसी का मतलब रीडिंग और राइटिंग स्किल्स होती हैं, और वैसे भी आंसर उसने एंड में ही बोला है. ओके ओके, सो दैट वाज इट. आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके 90% आंसर्स एंड में होते हैं, स्पीच के एंड में होते हैं, और जो हाँ एक्सेप्शन होती है वहाँ पे वो वर्ड पहले बोलता है मेन वर्ड क्वेश्चन का, और उसके बाद वो उसका आंसर इमीडिएट बाद में बोल देता है. ओके, so I hope this video is helpful for you. If do, then please like, share and subscribe. Thank you so much guys for supporting me.